हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएस क्लासेस। आज हम 12th क्लास में सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स इज गोइंग ऑन। दिस टुडे 7th लेक्चर ऑन दिस चैप्टर 4. 6 lectures has been done. In that, everything explained: determinant, types of and the definitions, others, theorems, properties, expand, and exercise 4.1, 4.2 and 4.3 also done. Cofactors, minors, okay, area of triangle, vertices is given, everything done. Now last question of this exercise 4.3, question number 5. That is, if determinant delta is equal to general form a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 general, and aij, capital Aij, this also standard general. Capital Aij is a cofactor of Aij, okay, and if a11, तो कोफैक्टर ऑफ a11 कैपिटल A11. If any example a23, then कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a23 इज कैपिटल A23, ij, ओके. इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय ऑप्शंस आर गिवन, ओके. Option A, option B, option C and option D. These options given, option A given A11, A31 से कैपिटल A31, तो ये तो रॉन्ग है. कैपिटल A11 उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है. एक्सपेंड हमने बताया हुआ है. तो बी पार्ट A11 कैपिटल A11, ओके. A12 कैपिटल A21 तो रॉन्ग हो गया दूसरा बी पार्ट भी. सी पार्ट A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गलत. कैपिटल A21 से ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए, यानी दैट एलिमेंट एंड कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट. ये हमने बताया हुआ है. एक्सपेंड करना है अलोंग एनी वन रो और अलोंग एनी वन कॉलम. एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू निकल जाएगी, बट उसमें ध्यान रखना है कैपिटल Aij, small aij, ij means same. तो if along that any one row or any one column you are doing, then element and the cofactor of that element. तो the same here, C A21 capital A11 से multiply हो रही, it is not. Then D A11 capital A11, A21, ठीक है, A21 capital A21 plus A31 कैपिटल A31. तो ये किसके अलोंग है? A11 एलिमेंट लिया, फिर एलिमेंट लिया A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर एलिमेंट लिया A3 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम A31. अब वही इसमें कैपिटल A11 कैपिटल A21 कैपिटल A31 से मल्टीप्लाई है. सेम ij, स्मॉल aij and capital Aij, same ij must be there, multiply with the element with cofactor, then we can say it is correct. So here D option is correct option. D option is correct. What is that? A11 into capital A11 plus here A21, यानी कॉलम 1 के अलोंग यहाँ एक्सपेंड किया हुआ है डी ऑप्शन में, ठीक है. A11 एलिमेंट इंटू कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 एंड प्लस A31 थर्ड एलिमेंट, दिस थर्ड एलिमेंट A31 into cofactor of this A31, same capital A31. So this D option is the correct option. Clear?
we know that. Done. Now after that, adjoint and inverse, D option is the correct option. Now adjoint and inverse of the matrix. Adjoint, yes, adjoint of a matrix. Any matrix that must be square matrix. Of its definition, adjoint of matrix definition, a matrix, adjoint of a matrix adjoint of a square matrix adjoint of a square matrix is a matrix is a matrix is a matrix of transpose of its cofactor matrix. Matrix of is a matrix of transpose of transpose of its cofactor matrix. Transpose of its cofactor matrix. Cofactors matrix. Main thing, transpose of cofactors matrix. So first cofactor matrix, if general you are writing adjoint of adjoint matrix is equal to transpose of the cofactor matrix, transpose of this. This means it is cofactor matrix A11. Capital A11 is the cofactor of the small a11. Capital A12 is the cofactor of element small a12. Capital A13 is the cofactor of the element small a13. Similarly, capital A21 is the cofactor of the element small a21, and capital A22 is the cofactor of small a22, and capital A23 is the element of
value of cofactor of the element a, small a 2 3. After that, capital A31 is the cofactor of the element small a31. Similarly, capital A32 is the cofactor of element small a32, and capital A33 is the cofactor of the element small a33. You know that, okay? After that, transpose of this we have to take. Then transpose of this means, we know, I told in the last lectures, transpose of a matrix. What? Exchange row into column. Exchange the columns with row, or row with column, we can say. Yani first row as first column, second row as second column, and third row right as third column. That will be the transpose of this matrix. Okay? Now transpose solve किया इसका क्या बन गया? स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई. वो क्या बन गई? फर्स्ट रो एज फर्स्ट कॉलम, A11, A12, A13. First row as first column, second row written as second column, A21, A22, A23. Similarly, third row written as third column, A31, A31, A32, A33. This is the adjoint matrix, and it is always square matrix. ठीक है? Square matrix का लेना. So this is the adjoint matrix. Clear? Okay. Now after that, what is inverse? Next point, inverse. Okay? Inverse, what will be? Inverse of matrix A is written A inverse, and this value is equal to adjoint of matrix A divided by determinant of A. Okay? Inverse of matrix A is equal to, written A inverse means A power, that -1, it is not power. Inverse is not power, it is not 1 upon A. Okay? A inverse means, what is A inverse? A inverse is if A into if adjoint of A into A is equal to A into adjoint of A, this adjoint A into A के साथ मल्टीप्लाई एंड A into adjoint of A के साथ इक्वल हो जाए, एंड इक्वल टू किसके बने? इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A into I. If this, then
inverse definition is there कि A will go inverse that side and determinant A will come this side. So adjoint A upon determinant A is equal to A inverse into I, and A inverse I is equal to, yani it is one theorem. From that direct we can write A will go that side, adjoint of A divided by determinant A will be equal to A will go that side and it will be inverse into I. Okay, this, and A inverse I, definition in the matrix I told, that is equal to A inverse A into I. Okay, A into I, identity matrix is equal to A. Okay, so A inverse into I is equal to A inverse. So this written A inverse. So is equal to A inverse. Done. So like this you understand, this is one theorem. We can prove this. Which we can prove? Proof is not in your syllabus, but we can prove if adjoint A into A, कोई A मैट्रिक्स ले लो, उसका adjoint A, adjoint फाइंड कर लो. adjoint मीन्स ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, adjoint A आ जाएगा, फिर A के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसकी, दैट विल बी इक्वल टू A, फिर adjoint A के साथ कोमुटेटिव होते हैं ये, तभी इनवर्स की डेफिनेशन है, और ये कोमुटेटिव आएंगे एडजॉइंट में हमेशा, एंड इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बनेगा. जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है. बिकॉज वी नो इन द इनवर्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स, कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, देन वी कैन से A inverse is equal to B and B inverse is equal to A. Okay, so like this definition we know. So by that definition we have taken if adjoint A into A is equal to A into adjoint A is equal to determinant A into I, then we can find A inverse. Then A inverse will be equal to adjoint A divided by determinant A. Okay, clear? Now a question arises that if determinant A equal to 0, यहाँ इसके बाद what will come? If determinant A is 0, inverse does not exist by the definition, because divided by determinant A we are writing, this is the formula we have to use. A inverse is equal to adjoint of A, I told कैसे बनता है, और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट A. डिटर्मिनेंट A यहाँ पर शुड नॉट बी इक्वल 0. Yeah, okay. If determinant A is equal to 0, first point, if determinant A की वैल्यू 0 बन गई, then A inverse does not exist. Does not exist. This point. Second point, why not exist? Because divided by 0. Any fraction, if divided by 0, any denominator is 0, any fraction, then not determinant, not determined, not defined. तो नॉट डिफाइंड मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट द इनवर्स, इनवर्स की वैल्यू कुछ नहीं आएगी. डन. सो अब सेकेंड पार्ट,
इफ, एंड ये जब जीरो है इसका नाम क्या होगा फिर, इसका एक स्पेशल नाम होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दिस मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स, डज नॉट एग्जिस्ट and matrix A is called a singular matrix. Singular matrix. इस कंडीशन पर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. सेकेंड, if determinant A इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नेगेटिव नंबर आ जाए और पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एनी रियल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव डिटरमिनेंट ए वैल्यू, then A inverse exists, then A inverse exists A inverse exists and matrix A is called non-singular matrix. Non-singular matrix. Non-singular matrix. Definition of non-singular matrix: if determinant A is not equal to 0, any real number, then that matrix is called non-singular. If equal to 0, then is called a singular matrix. So these definitions, singular matrix and non-singular, by calculate the value of the determinant. Okay, we can tell. So then this formula inverse and these you must take and remember to solve, okay, the questions. Now after that one example I am taking to find, ठीक है, one example. Find adjoint A example. Find adjoint A. Find adjoint A for A equal 4 A equal square matrix given 2 3 1 4, 2 3 1 4, adjoint matrix of the square matrix only we can find. So what definition I told you? Adjoint of any matrix A is a matrix of transpose of the its covector matrix.
तो फर्स्ट मेक द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट, यू नो capital A11, capital A12, capital A1, A21, capital A22, we can find. So find cofactors and then make the matrix and take the transpose of that. This is the process. So now first calculate A11. A11 cofactor of this 2. तो along this row cancel, along this column cancel, remaining is 4. So this is 4. Cofactor is 4. Then A11, A12, first row का second है 3. Cofactor of 3. Cofactor of 3. So along this row and column cancel, row cancel, so only one left remaining. And here cofactors definition, if I plus j is odd, then multiply by -1. So here 1 plus 2, 3 is odd, so multiply -1. So minus into this 1, -1, this. Now capital A21 cofactor of the element A21 यानी 1, this 1, यहाँ 1 है, तो cofactor of this 1, along this row cancel, along this column cancel, then remaining element 3, and here I and j sum is again और multiply by -1 to the 3, then -3. ठीक है बेटा, clear? I told cofactors how can find. After that capital of A22 cofactor of small a22 element, and it is here 4. So cofactor of 4, along this row cancel, along this column cancel, then remaining is 2, and I plus j is even, so as it is 2. This. So solution, we find this. So we can say, so adjoint of formula, adjoint of A matrix is equal to cofactor matrix transpose, यानी A11, A12 ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, then A21 and then A22. This is the cofactor matrix and transpose of that. Okay, transpose of this. So transpose of this, what will be? First row write as first column. So this implies adjoint of first value put. So adjoint of A is equal to ट्रांसपोज ले लो इसका, क्या बन गया? A11, A12 राइट एज द कॉलम A12 and second row right second column A21 and A22. This is the adjoint of A. Now put the values we have calculated. A11 value is 4, A21 is -3, A12 is -1, A22 is 2. So this is your adjoint of this A. Adjoint of 2, 3, 1, 4 is 4 minus 3 minus 1, 2. Done. So like this adjoint we can find. Okay. Now inverse if you want. Inverse. How can find? One example for inverse.
Okay. Find A inverse. If A this and B this, then verify that A B inverse is equal to B inverse A inverse. Or here find A inverse. Example 13. One example, find inverse. But inverse possible if adjoint A into A is equal to A into adjoint A is equal to determinant A into I. So one example is given, A equal to, then verify that adjoint A is equal to determinant A into I, and also find A inverse. So I will find A inverse directly by this example verification, and A into adjoint A is equal to determinant A into I. फर्स्ट ये है, फिर आपने इनवर्स फाइंड करना. तो आई विल फाइंड डायरेक्ट ए इनवर्स. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल 13 इन योर NCERT बुक. ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इक्वल 3/3 मैट्रिक्स टेकन in this 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 3 4 1 3 4. Yes, this A given, it is स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज 3/3 मैट्रिक्स. तो इसका इनवर्स फाइंड करना है. तो पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट. ओके, सो फॉर द एडजॉइंट सॉल्यूशन, फर्स्ट यू कैलकुलेट A11 A12 A13. कैलकुलेट A11, फर्स्ट एलिमेंट 1 है यहाँ, इसका कोफैक्टर. तो अलोंग दिस रो एंड कॉलम कैंसिल द एक्सपेंड 4 3 3 4. तो एक्सपेंड करेंगे इसको, क्या बनेगा 4 × 4 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 एंड देन अगेन एक्सपेंड कर रहे हैं. इसे 2/2 की है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा. तो -3 3 जा 9. This is A11. A12, this element 3, along this column cancel, along this row cancel, 1 3 1 4, स्क्वायर मैट्रिक्स. सॉल्व 1 3 1 4. तो सॉल्व किया 1 × 4 4 एंड माइनस से मल्टीप्लाई होगी माइनर को. 1 × 4 4 बिकॉज सम हेयर 1 2. ठीक है, कोफैक्टर, इसलिए माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई, एंड माइनर हो गया वैल्यू ऑफ 1 3 एंड 1 4. ठीक है, तो 1 3 एंड 1 4 का हो गया 1 × 4 4 एंड -3 4 -3. एंड दिस एलिमेंट इज सम ij इज ओड, दैट्स वाई माइनस से मल्टीप्लाई. ठीक है, एंड देन 1 3 even, तो ओनली कोफैक्टर. तो अलोंग दिस 1 3 एलिमेंट इज 3. ओके, तो अलोंग दिस कॉलम एंड रो कैंसिल 1 4 1 3. तो 1 3 जा 3 -4. ओके, नाउ आफ्टर दैट A21 A22 A23 कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो. सेकेंड रो के कोफैक्टर शुरू कर रहा हूँ मैं. ठीक है, A21 A22 A23. तो दिस कोफैक्टर ऑफ दिस 1 along this row cancel, along this column cancel, 3 3 3 4 left. 3 4 जा 12 -3 3 जा 9. 12 -9 एंड माइनस से मल्टीप्लाई 12
-9। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि इसमें सम जो है आई जे का ओड है, इसलिए टू माइनस से। यस, सिमिलरली नाउ A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो दैट एलिमेंट 4, तो दिस एलिमेंट का को फैक्टर कैपिटल A22 विल बी इक्वल टू along this row cancel, along this column cancel, 1 3 1 4, value of this square matrix 1 3 1 4, cross multiply 1 into 4 4 and minus 1 into 3 4 minus 3. And even, sum ij even, not multiply minus. Okay, now 2 3, A2 3, then sum is 5, 5 is odd, and multiply by minus to the minor, and minor will be, it is A2 3 means this element 3, cofactors of this 3, minus से multiply हो गया. Okay, then along this row, along this column cancel, then 1 3 1 3, then 3 1 ja 3 minus 3, 3 minus 3 0. After that A1 third row means A31, A31 calculate, A31 this 1, so cofactor of 1, along this row cancel, along this column cancel, then 3 3 4 3, then here 3 3 4 3 value 3 3 4 3, so 3 3 ja 9, cross multiply and minus 4 3 ja 12, 9 minus 12. Okay, after that A32, the second element of third row, yani this 3 along this row cancel, along this column cancel, then 1 3 1 3, तो 3 1 जा 3 minus 3 0, minus से multiply and then 0. Okay, after that last element A 3 3, cofactor of this A 4, cofactor of this 4, then along this row cancel, along this column cancel, 1 3 1 4, so value of this 1 into 4 4, minus 1 into 3 3, 4 minus 3, that is 1, direct I written. Okay, now this we have taken cofactor, the cofactor matrix adjoint A, so adjoint A will be equal to transpose of that. So transpose means first row is A11, A12, A13, first row write as first column, direct. So 16 minus 9, direct transpose also I am taking. So first row I am writing as first column, then 16 minus 9, 7. Okay. This 4 minus 3, 1 minus 1. 3 minus 4 minus 1. After that second row write as second column, because transpose we are taking. So A21, A22, A23, this is 12 minus 9, 12 minus 9 3, and minus out to minus 3. Then A22 write as second column, then 4 minus 3 1. After that 0. Similarly now third row write as third column, third row 9 minus 12 minus 3, 0 1.
this is your adjoint of A. Okay, now you calculate the determinant of A to find the value of A inverse. Okay, so determinant A along first row I am taking first row, these value cofactors these, तो एलिमेंट इनटू कोफैक्टर अंडरस्टैंड किसका कि ए का, ए ये है आपका बेटा ए, डिटरमिनेंट ए लेना है, ये डिटरमिनेंट नहीं लेना एडजॉइंट का, ठीक है, ए का, ए कोफैक्टर्स हैं A11 A12 A13 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो के कोफैक्टर हमारे पास हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर ये रहे 7 -1 -1, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट रो के कोफैक्टर एलिमेंट फर्स्ट रो का 1, तो 1 इंटू कोफैक्टर इज 7, ठीक है बेटा, प्लस एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 3 एलिमेंट इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस इज -1 प्लस थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 3 into cofactor of 3 is -1, okay beta, into -1, so simplify, so determinant of A value is equal 1 into 7 7, 3 into -1 -3, 3 into -1 -3, -3 -6, 7 -6 is 1, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट इज 1, सो A इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट A, दिस एडजॉइंट A इज दिस डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट A, यानी डिवाइड बाय 1, तो 1/1 डिवाइड बाय 1 एंड दिस 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, तो डिवाइड बाय 1 सेम दिस, देन दिस इज योर आंसर 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, answer. This is A inverse. Okay, clear? So like this we can find the inverse. I told you adjoint how can find, inverse how can find, and definition also I told, and example also I told. Now okay, take interest, watch, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. अपने जितने भी कॉन्टैक्ट है सब में वीडियो भेजें, उन्हें गाइड करें. Watch the video and subscribe and write the comment in comment box. Thank you.